morning. Today my topic is cyclic AMP. It is subtopic of my previous lecture, that is cell signaling. The topic cyclic AMP is divided into fifth part: introduction, history, synthesis, functions and role in eukaryotic cells. That is cyclic AMP dependent protein kinase. Now first, introduction. Cyclic adenosine monophosphate or CMP, or we can say 3/5 cyclic adenosine monophosphate, is a second messenger important in many biological processes. Cyclic AMP is a derivative of adenosine triphosphate and used for intracellular signal transduction in many different organisms, conveying the cyclic AMP dependent pathway. Now history. Scientist Earl Sutherland of Vanderbilt University won a Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1971 for his discoveries connecting the mechanism of the action of hormones, especially epinephrine, via second messenger, such as cyclic AMP. In 1998, a family of cyclic AMP sensitive proteins with guanine nucleotide exchange factor, that is GEF, activity was discovered by Earl Sutherland. Now synthesis of cyclic acid, cyclic AMP, is completed by some steps. First is, cyclic AMP is synthesized from ATP by adenylate cyclase located on the inner side of the plasma membrane and anchored at various locations in the interior of the cell. Second step, adenylate cyclase is activated by a range of signaling molecules through the activation of adenylate cyclase stimulatory G protein coupled receptor, that is capital S small s. Third step, adenylate cyclase is inhibited by agonist. What is agonist? Agonist is a chemical that binds to a receptor and activates the receptor to produce a biological process. Thus, adenylate cyclase is inhibited by the agonist of adenylate cyclase inhibitory G protein coupled receptor, that is capital G small I. For example, liver adenylate cyclase responds more strongly to glucagon and muscle adenylate cyclase respond more strongly to adrenaline. Fourth step, cyclic AMP decomposition into adenosine monophosphate is catalyzed by the enzyme phosphodiesterase shown in figure. Now, next point, functions of cyclic AMP. Cyclic AMP is a second messenger, as we know. It is used for intracellular signal transduction, such as transferring into cells the effect of hormones like glucagon and adrenaline, which cannot pass through the plasma membrane. ऐसे हॉर्मोन्स, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन और एड्रेनलिन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा पास नहीं किए जा सकते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं सेल्स में किसके द्वारा? साइक्लिक एएमपी, जो कि सेकंड मैसेंजर है, यूज्ड फॉर इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन. Second function, it is also involved in the activation of protein kinase.
प्रोटीन काइनेज में एक्टिवेशन में पार्टिसिपेट करता है. साइक्लिक एएमपी बाइंड्स टू एंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ आयन चैनल्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. साइक्लिक एएमपी बाइंड होते हैं और रेगुलेट करते हैं फंक्शंस ऑफ आयन चैनल्स को, सच एज HCN चैनल. आयन चैनल का एक एग्जांपल है HCN चैनल, हाइड्रोजन साइनाइड चैनल. अदर साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन सच एज EPAC1 एंड RAPGEF2 जो कि ग्रोथ फैक्टर्स हैं. तो इस प्रकार से साइक्लिक एएमपी आयन चैनल्स और अदर साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स को रेगुलेट करते हैं. नाउ लास्ट फंक्शन, रोल इन यूकैरियोटिक सेल्स. इट इज also called as function of cyclic AMP dependent protein kinase. Cyclic AMP is associated with the kinase function in several biological processes, including the regulation of glycogen, regulation of sugar and lipid metabolism. Cyclic AMP kinase functions के साथ एसोसिएट होते हैं और विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल प्रोसेस में सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, रेगुलेशन ऑफ शुगर एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म सम्मिलित किए जाते हैं. इन यूकैरियोट्स साइक्लिक एएमपी वर्क्स बाय एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज ए. यूकैरियोट्स में साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज ए के द्वारा कार्य करते हैं. It is also called as PKA, or we can say cyclic AMP dependent protein kinase. PKA is consisting of 2 catalytic and 2 regulatory units, that is known as C2R2. C2 catalytic and R2 regulatory units. Cyclic AMP binds to a specific location on the regulatory units of protein kinase and cause dissociation between the regulatory and catalytic subunits. These are C2R2, 2-phosphorylate substrate protein. The phosphorylate proteins may act directly on the cell's ion channel, that is HCN. Protein kinase A can also phosphorylate specific proteins that bind to promoter regions of DNA, causing increasing in transcription. बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है प्रोटीन काइनेज ए, जो कि फॉस्फोराइलेट होकर स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ में प्रोमोटर रीजन ऑफ डीएनए के साथ बाइंड होता है और कॉजिंग इंक्रीजेस इन ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन के को वृद्धि करने का एक कारण है. किंतु नॉट ऑल प्रोटीन्स काइनेज रेस्पॉन्ड टू साइक्लिक एएमपी. सभी प्रकार के प्रोटीन काइनेज साइक्लिक एएमपी को रेस्पॉन्ड नहीं करते. स्टिल देयर आर सम माइनर पीके इंडिपेंडेंट फंक्शंस ऑफ साइक्लिक एएमपी. फॉर एग्जांपल, activation of calcium channel, providing a minor pathway by which release of growth hormone then cyclic AMP is a second messenger and play vital role in cell signaling. That's all. Thanks.